We are in a short while from now expecting, as far as the matter of the Gyanvapi Masjid is concerned, will be taken up in the Supreme Court in a short while from now. Meanwhile, what is also now coming across is confirmed information. The Advocate Commissioner, one of them, we spoke to him exclusively a short while back and has confirmed that today will not be the day when the comprehensive and the detailed survey that went on for 3 days was carried out at the Gyanvapi Masjid will be submitted at the Varanasi court. They will be seeking for more time. And for some, the Gyanvapi Kashi Vishwanath tussle is said to be settled, because even as the survey that has concluded, the team has said to found traces of a mandir inside the masjid. Now, there are petitioners who were present when the survey was being conducted for the last day, that was yesterday, and they raced out of the complex and had said in excitement that Baba mil gaye. Now, Baba kahan se mile, kis jagah se mile? What they have been saying that this was an ablution tank where wuzu khana used to be there, or rather is there, is where the traces of a Shivling that has now been found. Now, the Hindu side approached the court, securing the place, asking the place to be sealed and additional force to be deployed for its security. That has been complied with at this moment. We are looking at in a short while from now. The bench in the Supreme Court will be taking up the matter. The masjid side has been contemplating raising the issue, saying that this is an attempt to spread hatred and communal disharmony. जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिले? नहीं, तो अंदर जो वो दावे कर रहे थे कि जो भी है, जो सबूत उन्होंने पेश किया, सब सही है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। If it is a fountain, then there will be a proper water management system, and the water will go out, and there will be a management system for a fountain. By no stretch of imagination, the way I have seen the spot situation, on ground situation, it can be called a fountain. Number two, just near the Shivling, there is a well, which was the original well of the temple. So according to me, what I have seen on ground and on the spot, in my belief and faith, this is a Shivling. Definitely it is subject to evidence. The trial court will go further and see that what is the depth of this Shivling. But this Shivling is just opposite Nandi. That's the most remarkable thing. 83 feet from Nandi, this Shivling is present, and right opposite Nandi, this Shivling is there in the Waju Khana of the masjid. And therefore, seeing this importance of the matter, I had gone to the Honorable Court seeking protection and seeking sealing of the entire Waju Khana, because the point is that this is a very crucial piece of evidence and it should not be destroyed at all. All right, so playing out even more reactions that are coming in, my colleague Ravikant is explaining exactly how and where the Shivling is located, said to be inside the masjid, which has now been sealed and its location has been secured. काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर से ये नंदी भगवान की तस्वीर है और यहीं पर एक रास्ता है तय जो नीचे आता है। व्यास परिवार दावा ये करता है कि ये जो बेसमेंट है वो उनका है और बेसमेंट के अंदर यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं उन्हीं पिलर पर जो है संस्कृत के श्लोक हैं वो दिखाई दिए हैं साफ तौर पर। उसके बाद यहाँ ये स्थान आप देख रहे होंगे इस मैप में, यहीं पर दावा किया जा रहा है कि वजू खाने के बीच में जो फाउंटेन लगा हुआ था वो शिवलिंग जो है वो यहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आज का दिन जो है बेहद निर्णायक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दावा किया गया है। कोर्ट कमिश्नर की टीम जो है हालांकि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी मिली है कि यहीं पर इसी स्थान पर जो है वो शिवलिंग पाया गया है। तो आप देखिए जिस तरफ नंदी का मुंह है ठीक उसी के सामने भगवान शिव का जो है शिवलिंग पाया गया है। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, सबसे पहले हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट गए और कोर्ट में ये अपील दायर की कि इस पूरे एरिया को सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए।
Let's get you another angle where Times Now has also accessed the map submitted by the then British government in court in 1936 that lays out clearly where the mosque is situated, on which earlier used to be a Mahadev temple at one point. There were idols of Bhairav, Ganesh, even Mahadev, Mankeshwar and Tarakeshwar that are said to be clearly marked. This map was submitted in the 1930s by the British government in court. This said plan of the ancient temple at Visheshwar. Right at the center, this map marks out the Shivling, which was present, but it wasn't the only one. This Shivling purportedly is the one that has been discovered today from the Wazukhana. But in addition to that, this map marked out multiple temples, that of Tarkeshwar, that of Mankameshwar, that of Bhairav. You see, each one of them has been marked out. Now, on both sides, you see one Dandapan, and then you see on the other side, there will be a Dwarpal. And on all the directions, then you have the various temples. You see that dotted line? That is where the mosque now exists. So what the British did, they said this is the temple compound, and on top of that they put a dotted line saying the initial temple compound currently has the mosque right on top of it. Not only that, in addition to marking out all the various places where the idols are present, that of Ganesh, that of Bhairav, they also marked out where the domes of the mosque currently exist. Now, in addition to the temples, like I said, on both sides, you had the guardian of the temple, as it were, the Dwarpal. But right in the end, you will see the minarets of the Gyanvapi Mosque are marked out right on top of the temple compound. Well, even as there is fear-mongering that continues to mount just ahead of the court hearing for which we are standing by in the Supreme Court, there are UP ministers who have warned against it, saying that while this is what the believers want, ultimately everything will happen in court and they will have to abide by it. मैं तो पहले जब फैसला आया था, निर्देश आए थे, तब भी उसका स्वागत किया था। जो सिविल जज वाराणसी ने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को और पुलिस को निर्देश दिया था कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो रहेंगे और 2 लोग और उनको सहायता करेंगे। वाराणसी काशी जो बसाई थी भगवान शिव की नगरी है। औरंगजेब के समय की ये घटना है जब मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किराएदार मकान मालिक को परेशान कर सकता है, मिसलीड कर सकता है कोर्ट को, कुछ मामले को लंबा खींच। वहाँ से निर्देश जो अदालत से आते हैं और किसी भी पक्ष को अगर परेशानी है, किसी भी पक्ष को, तो हाई कोर्ट में जा सकता है। भारत का संविधान कहता है कि अगर जिला एवं सत्र न्यायालय से आपको कोई दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और माननीय हाई कोर्ट में फैसले से दोनों पक्षों को में से किसी को भी दिक्कत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। We already have an worship act, and according to that, barring one such kind of an what do you call a monument or a place, rest others were all like taken care of in that worship act. But now since it is there in the court, I am sure the court will also will take into cognizance the worship act, will take into cognizance the other issue, and they'll come up with a judgment. सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जाता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही सत्य हैं और उनका दर्शन हो गया है और उनके प्रकट होने का समाचार आ गया है। न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ उसमें भी उसका उल्लेख हो। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसमें अगर पूरे साक्ष्य मिलते हैं तो आप लोगों का क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से उसको भव्यता दी जाएगी? माननीय न्यायालय जो आदेश देगा और शिव भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रख करके वो आदेश भी मैं देख रहा था, बहुत आदेश भी स्वागत योग्य है और माननीय न्यायालय के हर फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे। मतलब भी माना जाए कि भव्य मंदिर बनेगा अगर सबूत साक्ष्य पूरे हुए तो? मैंने कहा माननीय न्यायालय के हर आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे। भगवान नंदी की इच्छा शीघ्र पूरी हो और व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे। किसी भी हालत में कोई किसी को भी डिस्टर्बेंस
करने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक बयान दिया है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे इस पर? जैसे मैंने बताया कि माननीय न्यायालय में ये विचाराधीन है ये, और हम सबको माननीय न्यायालय के जो फैसला है उसका इंतज़ार करना चाहिए, और हम सबको जो फैसला होगा हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और राजनीति से बचना चाहिए। So we are just standing by for today's updates because, as you said, in a short while from now, where the Supreme Court is expected to hear the plea by the Masjid Committee against the entire exercise. This is a bench headed by Justice D.Y. Chandrachud, who will be taking up the plea of the Anjuman Intizamiya Masjid Committee, where the Mosque Management Committee, which had moved to Supreme Court last week seeking a stay on the survey as well on the proceedings at the Varanasi Civil Court. While the survey and the videography proceedings have been completed, the Muslim side is hopeful for a favourable order, which is a stay on the proceedings and not making the survey and its report public. पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज रिपोर्ट सबमिट हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। 3 दिन काफ़ी बड़ा बिजी कार्यक्रम था और आज हम लोग माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देंगे समय के लिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। तो जो समय मिलेगा उस समय पर हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब कल वहाँ हम लोगों ने पानी निकलवा करके उस पर साफ़ कराया गया, वहाँ पे कुछ चीज़ें निकली वहाँ पे, लेकिन वादी पक्ष द्वारा कोर्ट गई वादी पक्ष और वहाँ से उनको कुछ रिलीफ भी मिला है, जैसा सुनने में आया है। और अगर माननीय न्यायालय ने अगर कोई आदेश किया तो सही आदेश किए होंगे।